के लिए हमने एक छोटी सी स्टोरी लाइन बनाई है। ये एक फिक्शनल स्टोरी है, कोई सच्ची घटना नहीं है। और इस स्टोरी में हमने उन शब्दों का इस्तेमाल किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो हमारी सेटिंग इस प्रकार है दैट एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, राइट। और वहाँ पे एक नई ASO ने ज्वाइन किया है और उनके जो सिक्योरिटी मैनेजर हैं मिस्टर रवि, वो उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो उस बातचीत को हम देखते हैं कि कैसे इन शब्दों का इस्तेमाल इस बातचीत के दौरान किया गया है। तो सबसे पहले रवि जो सिक्योरिटी मैनेजर हैं वो प्रिया को वेलकम करते हैं, जो उनकी नई ASO हैं। प्रिया, वेलकम अबॉर्ड। बिफोर वी डाइव डीप, हैव यू एवर हैंडल्ड रिस्क असेसमेंट एट योर प्रीवियस जॉब? तो यहाँ पर रिस्क असेसमेंट का यूज़ हुआ। प्रिया बोलती हैं, यस रवि, एट माई लास्ट कंपनी इन पुणे आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग वल्नरेबिलिटीज़ इन आर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ हुआ। We then prioritize them and based on potential impact. Ravi, excellent, that's crucial. You see, we have recently expanded our operational plan. यहाँ पे operational plan का जिक्र हुआ to include more emphasis on cyber security. Cyber security का इस्तेमाल हुआ। Bengaluru's tech landscape makes us a potential target for digital threats. Priya, absolutely Ravi, but how are we ensuring data privacy for our employees and stakeholders? Ravi, great question Priya. We have recently conducted a security audit and based on those findings, we are making revisions. Compliance with local and international regulation is paramount. Then Priya says, I noticed we have several third-party vendors. How do we handle vendor management? Ravi says, we have strict criteria. Every vendor undergoes a thorough background check. We have also set up a contingency plan in case a vendor fails to deliver or if there is a breach from their end. Priya, speaking of breaches, is there a standard incident management process? Ravi says yes. Firstly, every security personnel undergoes regular training and development sessions. In the event of an incident, we have a crisis communication team that handles internal and external communication. This ensures confidence remains high. Priya says that's well thought out. And what about physical security? Ravi says we are enhancing that as well. Our asset protection strategies are being re-evaluated, especially for our branches and metro cities. The budgeting for the next fiscal year is skewed towards upgrading our system and processes. Priya, I have also been thinking of ways to improve business continuity, especially during unforeseen events like floods, something like what Chennai experienced during the last few years. Ravi says, spot on Priya. Which events are precisely? We are updating our policy development. We are focusing on bigger picture with long-term strategic planning. Priya says, I am eager to contribute. Let's ensure our company remains a benchmark for security standards across India. Ravi, absolutely Priya. With dedication and teamwork, we will achieve that and much more. Priya, in case of any serious breaches, how do we handle the investigation process? Ravi says, good point Priya. We have an internal team dedicated to this. They liaise with local authorities if necessary and ensure that any breaches are thoroughly investigated. This not only helps us rectify current vulnerabilities but also aids in preventing future incidents. सो ये एक छोटी सी स्टोरी लाइन हमने क्रिएट की है जिससे आपको थोड़ी सी मदद हो सके कि डे टू डे कन्वर्सेशन में या वर्क प्लेस पे हम जो बातचीत करते हैं मैनेजर्स उनके और उनकी टीम, तो इन शब्दों का कैसे इस्तेमाल